Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss about the spectrochemical series and filling of d orbital in octahedral and tetrahedral complexes. तो हमें लास्ट क्लास रे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विषय में डिस्कस करते आज हमें डिस्कस करबा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मु लास्ट क्लास रे कही जे लिगैंड रो नेचर स्ट्रॉन्ग हो पारे किबा वीक हो पारे से बेसिस रे आमे तार स्प्लिटिंग करिबा। तो आज आम डिस्कस करिबा को लिगैंड रो नेचर स्ट्रॉन्ग अच्छी कहार वीक अच्छी। दैट इज आयोडीन माइनस, ब्रोमाइड, थायोसियानाइड, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, then oxalato, water or aqua, isothiocyanate, EDTA, ammonia, ethylene diamine, cyanide, कार्बोनिल। तो ये हेले हमर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एमन को कंपैरिजन रे हमें गोटे लिगैंड को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिगैंड बा वीक लिगैंड कहबा ता बेसिस रे लो स्पिन हाई स्पिन कहबा। तो एठी हम देखि परछे कार्बोनिल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड, तो ये हमको लो स्पिन देखिए। आयोडीन हमर वीक लिगैंड, ये हमर हाई स्पिन देखिए। नॉर्मली वाटर रो लोअर पार्ट को हमें वीक और वाटर रो हायर पार्ट को हमें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड बोली कंसीडर करू, किंतु जदि क्लोरीन सहित सल्फाइड को कंपेयर करवा सल्फाइड इज स्ट्रॉन्गर दैन क्लोरीन। तो कंपैरिजन बेले ए सीरीज टाको हमें मन रखिबा। नाउ हमें स्प्लिटिंग करवा। तो स्प्लिटिंग हमें लास्ट क्लास रे ऑलरेडी कर सारथिले। तो स्प्लिटिंग हमें ऑलरेडी लास्ट क्लास रे कर सारथिले। तो सेटा को एठी हमें आउथरे करबा। तो ये हूँ आमर T2G ऑर्बिटल, एटा हूँ EG ऑर्बिटल जोटा कि हमें d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड d z स्क्वायर बोली कहूँ। तो कंसीडर करो आमे गोटे सेंट्रल मेटल एटम नेले जार कॉन्फ़िगरेशन D6 अच्छी तापाई सेम स्ट्रक्चर आमे दी थर ड्रॉ करिबा विथ
तो वन्स मु स्ट्रॉन्ग लिगैंड सहित वन्स मु वीक लिगैंड सहित करी। तो फर्स्ट मु स्ट्रॉन्ग लिगैंड केस रे करूछु। तो मु एठी अज्यूम करिछि जे एठी हमर स्ट्रॉन्ग लिगैंड अछि प्लस D6 स्ट्रक्चर अछि। स्ट्रॉन्ग लिगैंड हेले आमे कहि परिबा जे एठी लो स्पिन हेबो। अच्छा, तो ligand whether strong or weak I can identify by seeing this spectrochemical series. ए spectrochemical series को देखि कि आमे ligand रो नेचर strong और weak कैलकुलेट करि परिबा। strong weak कैलकुलेट करला परे नेक्स्ट स्टेप होछि तार लो स्पिन हाई स्पिन। तो एठी 6टा इलेक्ट्रॉन अछि। आई विल फिल दिस वन 1 2 3 4 5 6 सिमिलर जिनस एठी करियर अछि 1 2 3 4 5 6। सो 6टा इलेक्ट्रॉन पाइले। ये 6टा इलेक्ट्रॉन को हमें यदि स्प्लिट करिबा then I will find I told you that low spin occur. Low spin माने होची पेरिसेंटर रो लोअर रे जो ऑर्बिटल्स थिबे ताको आगे हमें फिल अप करिबा देन हायर सेंटर को जिबा। तो यार माने कोन लो स्पिन रो माने होची हमें डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करले ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। सेति हम पाखरे दी प्रकार स्प्लिटिंग हला T2G एंड EG। तो बैरी सेंटर रो लोअर रे जो माने अछंती सेमानकर लो एनर्जी, जो माने बैरी सेंटर रो अपर पार्ट रे अछन सेमानकर एनर्जी हाई अछि। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड रे लो स्पिन हेबो सेति पय आके जो ऑर्बिटल्स माने लोअर देन द बैरी सेंटर अछंती सेमाने फिल अप हेबे। सो आई हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। आई विल फिल दिस इन T2G 1 2 3 4 5 6। जदि हम चेक करिबा ताहले एठी हमर इलेक्ट्रॉन्स जस्ट अ मिनट आई विल रिमूव दिस वन। नाउ हम एठी देखिले जे सब जाक इलेक्ट्रॉन T2G रे फिल अप हला EG रे कोनोसी इलेक्ट्रॉन नाही। ता माने हम कहि परिबे जे यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर हम T2G 6 EG 0। तो एठी मु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाइली T2G 6 EG 0। अच्छा, तापरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट स्टेप होछ हम कैलकुलेट करबा जे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केतेटा अछि। सो आई कैन सी देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन magnetic behavior that is diamagnetic नेक्स्ट होची क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सिंपली आमे जदि लक्ष्य करिबा T2G पई ईच ऑर्बिटल रो इलेक्ट्रॉन पई आमे एठी नै छै -0.4 del 0 आउ EG रो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पई मु नै छै +0.6 del 0। सिंपली सेटा पकेबार अछि। T2G रे हम पाखरे 6 इलेक्ट्रॉन्स अछि। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स इनटू T2G इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी -0.4 del 0 प्लस EG रे नो इलेक्ट्रॉन्स 0 into +0.6 del 0 प्लस केतेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अछि मो पाखरे 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अछि दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 3p। सॉल्व करले -2.4 del 0 plus 3p। Okay, this is about to calculate in this splitting. Similarly हमें D1 रु नहीं D10 पर्यंत
स्ट्रॉन्ग लिगैंड पे हमें कैलकुलेट करि परिबा। For easier purpose I am showing this part only। जेतेबेले हमें कौन सी स्प्लिटिंग को शो करवा हमको टोटल ए ड्रॉटी ए स्ट्रक्चर टी ड्रॉ करिया पड़िबो। वर्तमान फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पज मो लास्ट पार्टटा ही ड्रॉ करिकी बुझौछि। ओके तो सेपटे आम D6 करथिले एबे आम डिस्कस करबा D1 पे। D1 केस रे जदि आम कैलकुलेट करबा D1 रे एठी गोटे इलेक्ट्रॉन रहइबो एठी गोटे इलेक्ट्रॉन रहइबो। सो आमर स्ट्रक्चर आसीबो T2G1 Eg0। जस्ट अ मिनट T2G1 Eg0 CFSE आसीबो 1 into minus 0.4 del 0 plus no pairing electron, no easy electrons, so 0 plus 0p, so our answer is minus 0.4 del 0। Similarly जदि मु 2 electrons नौची D2 structure नौची तो सेठी मोर दीटा electron fill up होबो। Always remember while we are filling the electrons we should share first before pairing, that is called Hund's rule। तो से D1 पाई आम लिखिले D1, D2 पाई हमरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होबो T2G2 Eg0। ये हमरो पैरामैग्नेटिक थिला तो ये भी हमरो पैरामैग्नेटिक आसीबो। यार क्रिस्टल फील्ड आसीबो माइनस सॉरी 2 into minus 0.4 del 0 plus 0 plus 0p minus 0.8 del 0। Similarly D3 पाई हमरो कॉन्फ़िगरेशन होबो एठी आ गोटे इलेक्ट्रॉन बढ़ी जिवो, that is T2G3 Eg0। it is also paramagnetic structure है जो 3 into minus del 0 so del 40 plus 0 plus 0p minus 1.2 del 0। मुझे D4 पाई स्ट्रक्चर करे D4 रे आ गोटे इलेक्ट्रॉन है जिवो। मन रख टोटल आम केवल स्ट्रॉन्ग लिगैंड पाई करूचे से लोअर फिलअप होची। या परे आम कैलकुलेशन करबा वीक लिगैंड पाई। तो एठी हमरो कॉन्फ़िगरेशन आसला T2G4 Eg0, ये भी हमरो पैरामैग्नेटिक आसला तीटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी, सो दैट इज 4 into minus 0.4 del 0 plus 0 plus 0p, that is minus 1.6 del 0। नेक्स्ट अच्छे D5 पे लेटे आगोटे इलेक्ट्रॉन बढ़ी जीवो, सो T2G5 Eg0 it is para 5 into minus 0.4 del 0 plus 0 plus 0p minus 2.0 del 0। Next D6 already हमें D6 से पढ़े कैलकुलेट करछे, so I am writing T2G6 Eg0। this is about dia because एठी आ कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं।
सो यार आंसर आमर आसला -2.4 del 0 plus 3p. Again one mistake is there. तो T2G 4 रे आम पाखरे गोटे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन थिला, सो इट विल बी 1p. T2G 5 पे we have two pair of electrons, so it will become 2p. Sorry. Similarly D6 by 3 pair of electrons. तो आमे कैलकुलेशन बेले केतेटा T2G इलेक्ट्रॉन्स अछि इनटू -0.4 प्लस केतेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अछि ताको भी कैलकुलेट करिबा. Similarly, if I am going to D7, you can see in D6 already 6 electrons filled in T2G. There is no space in T2G. T2G रा कोनोसी space nahi. So 7th electron will promoted to the EG. Now our configuration become T2G6 EG1, and again the magnetic behavior is para. So our calculation becomes 6 into -0.4 del 0 plus 1 into 0.6 plus 3 pairing electrons. Solve kale 6 4 is -2.4 and plus 0.6. -2.4 0.6 kale -1.8 del 0 plus 3p. This is our next. Again जदि मु D8 रो कैलकुलेशन करी 8th electron up को जीवो, so our configuration becomes T2G6 EG2. Again it is para because I can see 2 unpaired electrons are there. Solve kale 6 into -0.4, that is -2.4, 2 into 0.6 1.2. It means it will become -1.2 plus 3 pairing electrons. Then हमें D9 configuration करिबा. Just a minute. मैं ये ऊपर कर दूचे. D9 आमर आसीबो 9th electron एटी upper part रे जीवो. That's why our configuration becomes T2G6 EG3, that is para. तो एटी हमर गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बढ़िला. That's why हमर CFSE एनर्जी हे जीवो -1.2 del 0 plus 4 paired electrons आसिला 1 2 3 4, so 4p. D10 पाई आमर configuration further 1 electron एटी बढ़िबो, so T2G6 EG4. ये आमर again डाया हे गला, so again आमर एनर्जी हे जीवो 6 into 4 2.4, 4 into 6 2.40 plus 5p. 5टा पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हे गला. एटा एटा मिस्टेक थिला, एटा 0.6 हेबो. So this is all about the calculation of electronic configuration, magnetic behavior and crystal field stabilization energy. तो हमें टोटल कैलकुलेशन हमें पाइले D6 and D10. D6 and D10 आमर होची कोन ना डायमैग्नेटिक इन नेचर. जदि आमर कोऑर्डिनेशन नंबर
6 थाए आउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पाए हमें नौचे विथ स्ट्रॉन्ग लिगैंड से केस रे D6 एंड D10 पाई हमरो मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक हेबो ओके नेक्स्ट आमे प्रोसीड करिबा फॉर वीक मैग्नेट वीक लिगैंड सो एबे हमें डिस्कस करबा सेम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रे जदि वीक लिगैंड थाए ताहले इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग केमती हबो हाई स्पिन कहा कहबा लो स्पिन रे हम कहितली जे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बारिसेंटर लोअर ऑर्बिटल फिलअप हबो देन फर्दर से प्रोसीड करिवो बट इन केस ऑफ वीक लिगैंड सबुजाक इलेक्ट्रॉन बोथ T2G एंड EG रे सिंगल शेयर्ड हेबे आफ्टर शेयरिंग सेठी पेयरिंग हबो दैट इज ऑल अबाउट द वीक लिगैंड तो आम पाखरे सेम आई विल टेकिंग द एग्जांपल ऑफ D6 तो D6 केस रे फर्स्ट हमें इनिशियली स्टार्ट करबा 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 ओके नाउ एठी हमर हाई स्पिन होची आगे हमें सब ऑर्बिटल गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन दबा जदि बळिला नेक्स्ट हमें पेयरिंग करिबा सो वी विल स्टार्ट विथ द T2G 1 2 3 4 5 then it will 6 so D6 पाई मोर कॉन्फ़िगरेशन हला T2G 4 EG 2 मैग्नेटिक बिहेवियर चार्टा अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छी सो इट इज पारा आउ क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम 4 इंटू माइनस 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 गोटे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन अच्छी सो माइनस 1.6 1.2 that will be minus 0.4 plus 1 pairing electron similarly जदि हमें D1 रू 10 पर्यंत कैलकुलेट करिबा कौन पाइबा केवल गोटे पार्ट कवर करछि यू कैन सी बट डायग्राम रे all part we have to draw now starting from D1 तो D1 केस रे गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी so lower part is filled so our configuration becomes T2G1 EG0 गोटे unpaired electron अच्छी that's why it is para and crystal field stabilization energy will be this is part CFSE calculation minus 0.4 del 0 no pairing of electron D2 केस रे एठी आ गोटे इलेक्ट्रॉन फिलअप हबो T2G2 EG0 दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन para so our answer will be minus 0.8 del 0 no pairing of electrons is there then further it is D3 third electron will be filled here so our configuration becomes T2G3 EG0
again 3 unpaired electron, that's why it is paramagnetic. So minus 1.2 del 0 plus 0 pairing. Now d4 रे fourth electron will come to the Eg. हाई लो स्पिन रे कौन होता आम ताको T2 रे ही फिल करते बट ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन पड़ेबो Eg रे. So our configuration becomes T2G4 Eg1. Again it is para having 4 unpaired electron. So minus 1.2 plus 0.6, that is minus 0.6 del 0 plus 0 pairing. D5 रे fifth electron also in Eg, so that is T2G4 Eg1, again para having 5 unpaired electron, and here it is 0 at any cost. So energy becomes 4 3 is 1 minus 1.2, 6 2 is plus 1.2, 0 plus no pairing. D6 हम ये calculate करछे. Now D7, seventh electron will come to T2G again to get paired. So our formula is T2G5 Eg1, sorry mistake, it is Eg2. Eg2, it will come para having 4 unpaired electron. So gote bodla minus 0.6 del 0 plus 1 pairing electron. D8 8 हेले एठी आ गोटे इलेक्ट्रॉन बढ़िबो, that is T2G 6 Eg2. Again it is paramagnetic as 3 unpaired electron I can see. So minus 1.2 del 0 with 2 paired electrons. Now we will calculate D9. For D9, third T2G orbital get paired. So our just a mistake I did 4 to 6. Easy. T9 by good electron up 0. So now T2G6 टिके calculate कर दो. 6 into 0.4, that is 2.4, 2 into 1.2, 1. ठीक है. T2G6 Eg3, it is para. So 6 into 0.4, that is 2.4 and 1.8, so it becomes 0.6 plus 4 pairing. Just a minute, I can check it again. Something is there. For 5, acha it 2 pairing hobo, this will be 3 pairing hobo. D9 4 pairing. D10, in case of D10 I can see T2G6 Eg4 and it is diamagnetic, that will become again 0 with 5 pairing. जदि हमें बोथ केसेस रे कंपेयर करिबा, तो हमरो D10 रो कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी D1 2 3 अप टू D3 कॉन्फ़िगरेशन जदि हमें वीक सहित कंपेयर करिबा ऑलमोस्ट सेम अछि. D4 रो कॉन्फ़िगरेशन अछि T2G4 sorry এটা T2G3 হবো. D4 configuration weak point T2G3 Eg1 अछि, एपटे T2G4 Eg0 अछि, तो डिफरेंट अछि. बट D8 रो configuration strong ligand point T2G6 Eg2 अछि, एठी T2G6 Eg2 अछि. D9 रो T2G6 Eg3 अछि, D9 रो T2G6 Eg9 अछि, D10 भी T2G6 Eg4 अछि. सो हमें बोथ स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड रे
आम गोटे जिनस फाइंड कले जे मेटल हैविंग D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन रे लिगैंड रो नेचर सहित कौन सी इंपोर्टेंस नहीं. सो आम लिख पार द नेचर ऑफ ligand sorry और चेंज करा the structure of or the splitting of d orbital is independent of nature of ligand if central metal atom having configuration D1 D2 D3 D8 D9 and D10. तो जदि आम पाखरे सेंट्रल मेटल आटम रो कॉन्फ़िगरेशन ए 6 रु एनी अच्छी ताले लिगैंड रो नेचर स्ट्रांग हो किंबा वीक हो ता सहित आमर कोनोसी रिलेशन नाही. बट एमान को छाड़ी के जदि एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन अच्छी दैट मे बी D4 D5 D6 D7 तो सेमान को केस रे नेचर ऑफ लिगैंड इज इंपोर्टेंट व्हिच हेल्प्स अस टू स्प्लिटिंग द d orbital. Okay, thank you.